What is congruency? When two figures are exactly the same, that means with same size and same shape, they are called congruent figures. Hey everyone, I'm Meenu Gera, online mathematics wizard, and welcome to Meenu's Maths once again. If you are new on my channel, just subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon to receive notifications of my new videos. In this video, I am going to discuss congruency of triangles. Very important topic for class 9th and 10th and higher classes also. So without wasting time, let's get started and jump into my PC. So first of all, we will discuss that what are congruent figures. The figures which have same shape and same size also. As we discuss about the triangles, you can look at these two triangles. Both have, I am telling you, triangles. That means shape is same. Closed shape, closed. And if all sides are equal, corresponding sides, if I say this side is equal to this is equal to this, and the third one is equal to this. Lengths of sides are equal and angles are equal, size is equal, shape is equal, then we can say that these are congruent triangles. That means if we overlap one triangle on the other one, the first one will be not seen. तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे तो पहले वाला दिखाई नहीं देगा. In today's video, I am going to speak Hindi also on special demand of my students. And what's the other thing? अगर मैं सर्कल की बात करूं and if I say ये इसकी रेडियस है R and this is another one, same radius क्यों? अगर एक सर्कल को दूसरे सर्कल पे हम रख दें तो पहले वाला सर्कल जो है दिखाई देना बंद हो जाए, कंप्लीटली उसे ओवरलैप कर दो. सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट्स, सेम क्लोज्ड शेप and same size also. Size, how can we say size? Because radius are same, size is same and shape is same. These two circles are congruent. And if we talk about squares, square के अंदर हमें पहले ही मालूम है कि स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती ही हैं. दैट मीन्स इस स्क्वायर की साइड्स अगर दूसरे स्क्वायर के इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स साइज इक्वल है. शेप तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं स्क्वायर है, दैट मीन्स बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. देन व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? दे शुड हैव सेम साइज एंड सेम shape also. Same shape also. If I talk about this is a triangle and this is a square. Can be it congruent? No, because shapes are different. And if I talk about this triangle and compare कर दें हम इस triangle से, क्या ये दोनों congruent हो सकते हैं? No. Because shape is different. I mean to say size is different. Here shape is different and here size is different. So congruency का रूल क्या है? Shape भी same होनी चाहिए और size भी same होना चाहिए. Understand? Now let's discuss congruency of triangles. These are two triangles. We can name it like A, B, C or P, Q, R, any name. मान लो कि दोनों triangles congruent हैं. If triangle ABC is congruent, this is the symbol of congruency. This sign और नीचे equal to, two lines. This is the symbol of congruency. If triangle ABC is congruent to triangle PQR, then तो क्या होगा? इनकी सारी साइड्स
corresponding sides equal होंगी. What's that? That means AB is equal to PQ. अब ये corresponding क्या है, ये भी अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ. AB is equal to PQ, first thing. Next, if I say BC is equal to QR, that means this equal to this. And the last side AC is equal to PR. That means this one. This is equal to this. और इसके अलावा because they are congruent, if they are congruent, sides equal होंगी और सारे corresponding angles भी equal होंगे. That means A is equal to P. A is equal to P. Angle A is equal to angle P. Angle B is equal to angle Q. This one. This angle will be equal to this Q. And the last angle C, that will be equal to angle R. This one. This is C is equal to R. अब ये corresponding क्या है, पहले जरा उसको भी अच्छे से समझ ले. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है triangle ABC and I am comparing to triangle PQR, that means ये जो A point है ना, इसका फर्स्ट वाला, ये corresponding है P के. A is corresponding to P and B is corresponding to Q. B is corresponding to Q. हम सिंपली कह सकते हैं जो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट सामने हो, एग्जैक्ट उस स्पेस उस जगह पे हो, उसे कहते हैं corresponding. और जो C है वो R, C जो है वो R के corresponding है. ये मीनिंग होता है corresponding का. अब सपोज करो कि मैं इसी ट्रायंगल को, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग corresponding a little more, इसी ट्रायंगल ABC को अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में मेंशन कर दूं लाइक दिस QRP, इज इट ट्रू? विद दीज कंडीशंस, अगर कंडीशंस यही वाली हैं तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट के टाइम हमें कॉरस्पॉन्डिंग को ही उसके सामने लिखना है, बिकॉज corresponding parts are equal. As this is not possible. It's wrong. You have already seen the word CPCT. If you are in 9th or 10th standard, if you know a little about congruent triangles, आपने जरूर सुना होगा CPCT. What is CPCT? Corresponding parts of congruent triangles. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. दैट मींस CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग को, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लुक एट दिस. सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स अगेन, लाइक दिस इज A, B and C. This is again P, Q and R. If A is 80 degree and P is also 80 degree, C is 30 degree, just let it, this is also 30 degree and this is 70 and this is also 70. We can see that A is equal to P. So it's quite easy to say that A is corresponding to P, B is corresponding to Q, C is corresponding to R. But if I take any other example, like this, I have taken this triangle
and this is another triangle. इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं इसको नाम देती हूँ ABC, PQR, again if I say this is 80 और Q वाला यहाँ पे मैंने P की जगह Q को लिया है 80 and C 30. Here my P is 30, B is 70 and here R is 70. Now which are the corresponding parts? Yes, you are right. A is corresponding to Q. Here A is corresponding to Q and we can say B is corresponding to this one because these are 70. B is corresponding to R and C is corresponding to P. And in this case it was quite simple. I am writing it here just to clear you that how to write it. जब हम congruent लिखेंगे तो उनको लिखना कैसे है. C है R के. जब इसके अंदर मेंशन करना है तो हमने लिखना है ABC is congruent to, just write down corresponding part. A के corresponding P है, B के Q, C के R. A के सामने P, B के सामने Q, C के सामने R. अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ABC को तो डायरेक्ट लिख लो, congruent. A के सामने Q होना चाहिए, B के सामने R होना चाहिए और C के सामने P. This is triangle. Don't forget to write down triangle. Here triangle ABC is congruent to triangle. This is triangle. Triangle QRP. I think now you have understood properly that what is the meaning of corresponding. These two examples are showing exactly what is corresponding. Okay. Now we go to the next topic, criteria of congruency of triangles. You can say it criteria, you can say it types of congruency, you can say it axiom also. That is SSS, axiom, SAS. I'm telling you what is that. So first of all, सबसे पहले है S congruency rule or congruency axiom. You can say anything. This is, what's this? SSS. I think बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. Side, side, side. SSS, side, side, side. That means if I have two triangles, we can say. So in SSS, side, side, side congruency, suppose we have these two triangles and we have to prove that these are congruent. If AB is equal to PQ, again corresponding sides, keep it in mind. AB is equal to PQ and BC is equal to QR, AC is equal to PR. Then we will say that these two are congruent. If AB is equal to PQ and BC is equal to QR, AC is equal to PR. That means by SSS congruency. What can we say? Yes, you are right. Triangle ABC. Remember that corresponding part should be written properly. In front of that, P, Q, R. And what is the second type? In second type, we can say that
SAS. SAS congruency rule, that means side angle side congruency rule. तो ये क्या है देखते हैं. Again we have two triangles. Like this we have two triangles. I am drawing rough figures. So SAS, two sides and included angle. Suppose this is equal to this. I am naming it as now I am taking different name like this. This is DEF, and can I say it QRS? If DE is equal to QR, if DE is equal to QR, and other side I can take this one, EF is equal to RS. EF is equal to RS. Now take included angle, that means वो एंगल जो इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है. तो कौन सा लेना होगा एंगल? कमेंट बिलो. E and R. एंगल E is equal to एंगल R. आप इसे कंप्लीट भी लिख सकते हो, एंगल DEF and QRS ऑल्सो. लेकिन आप यहाँ पे DFQS ये वाले एंगल नहीं ले सकते. It is compulsory to take included angle. Remember it carefully. Included angle. Now, if we have these three conditions, then by SAS congruency, these two triangles are congruent. And while writing the congruency condition, keep the corresponding parts in your mind. I think you have understood the method properly. So, according to corresponding parts, this is D, E, F, that is. Now, how will we say that which is its corresponding? E और R इक्वल हैं. It means जहां हमने E लिखा है उसके बिल्कुल सामने आप R लिख सकते हो. Now look at this. This is DE QR. DE QR. ठीक है? EF RS. EF RS. Corresponding parts बहुत ज्यादा जरूरी हैं. Now I am going to the third type. What is third type? Third type का नाम तो है बेटे ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. अब अगर आप इसके नेम को देखोगे तो आपके माइंड में यही आएगा कि शायद जैसे लास्ट में था कि इंक्लूडेड एंगल लेना है, शायद इसमें भी इंक्लूडेड साइड कंपल्सरी होगी. इफ वी टॉक अबाउट रूल तो इंक्लूडेड साइड बोला जाता है, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको इंक्लूडेड वर्ड को किस तरह से साइड करना है. दिस इज ABC एंड दिस इज DEF. So I am saying if angle A is equal to angle D, the corresponding angles A is equal to angle D. Okay, and angle B is equal to angle E. That means this is equal to this. And the third, if I say AB is equal to DE, this is equal to this. So by ASA congruency,
both triangles are congruent. And make sure to write corresponding parts in front of each other. A का corresponding यहाँ पे D है, ये मैं कहाँ से ले रही हूँ? From these conditions. B के लिए E है और C के लिए जो बच गया है F, D, E, F. अब आप सोचोगे I was telling you that included is not compulsory, then why am I taking included? I am telling you it is not compulsory to take this one. We can also say it like this: if A is equal to D and B is equal to E, it may be that BC is equal to EF. Then we can also apply this one also. This is AAS. Here it becomes AAS. It is also 100% right. AAS. And if we write it like this, suppose we have taken, I am taking another example. This is a triangle ABC, and this is another example, another triangle. This is P, Q and R. If I say B is equal to Q, C is equal to R, and take any side, you can take AB. I mean to say जिस जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, AB PQ के इक्वल है तो भी कंडीशन सही है, BC इक्वल है QR के तो भी कंडीशन सही है, और अगर AC इक्वल है PR के तो भी कंडीशन सही है. यहाँ पे हमारे इसमें क्या बनता है? दिस इज साइड एंगल एंगल, दैट मीन्स SAA. अब जब हम बात करते हैं इसकी, AAS is also right, AAS is also right, ASA is right, and SAA is also right. Why it is? ऐसा क्यों है? साइड्स में तो ये नहीं हुआ, लेकिन एंगल्स में ऐसा क्यों हुआ? It is due to angle sum property. You know what happened? जब हमने दो एंगल्स को इक्वल बताया है ना, due to angle sum property, I think you all know angle sum property. We know that तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी तो इक्वल ही होगा. अंडरस्टैंड? अगर थर्ड भी इक्वल है तो जो भी हम साइड ले लेंगे ना वो अपने आप इंक्लूडेड ही आएगी. इट इज द रीजन दैट वी कैन से इट इन 3 ways. And in the fourth type, the last type, that is RHS congruency rule, right angle, hypotenuse and side. ये जो congruency rule है ये right angle triangle पर ही अप्लाई होता है. जब भी right angle triangle आए ना, most of the time आपको क्या समझ लेना है, यहाँ पे RHS ही यूज होने वाला है. So this is एक एंगल 90 डिग्री का है, because we are saying it is right angle triangle. We can name it like this: A, B, C. This is again P, Q, R. यहाँ मैंने डायग्राम इस तरह से बनाए हैं ताकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगेन रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका. If right angle, that means angle B is equal to angle R. Second thing, hypotenuse. Hypotenuse, what is hypotenuse? Opposite side of this 90 angle. This is hypotenuse is equal to this hypotenuse. That means if I say AC is equal to PQ. What is third thing? This is side. अब जब साइड की बात करेंगे, साइड कोई भी हो सकती है, दोनों बेस भी इक्वल हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर भी, मे बी कि इसका परपेंडिकुलर उसके बेस से इक्वल हो, समथिंग लाइक कोई भी एक साइड इक्वल हो. यहां मैं ले रही हूं AB is equal to PR. I am saying AB is equal to PR. So right angle, hypotenuse, side by RHS congruency rule. What happened?
that both triangles became congruent. अब लिखना कैसे है? ABC को डायरेक्ट और अकॉर्डिंग टू दैट A के सामने P नजर आ रहा है, मीन्स ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस इज P, और B के सामने हमें R नजर आ रहा है, दिस इज R, P R. C के सामने है Q, दिस इज Q. ABC triangle is congruent to triangle PRQ. Look at this carefully. This is PRQ. This is not PQR. Okay. I think now you have been completely perfect in congruency of triangles. Hope you have understood the idea of congruency of triangles properly. Stay tuned with me because my next video will be on similarity of triangles and I will clear all the differences between similarity and congruency also. If you like my video, just hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.